Not in our hands. I mean, if, as they say, that there are few lakh people who are not paying us public performance royalty, we can't have few lakh cases in the court. That's not possible. It is only the government who can put the pressure by making some kind of a rule, some kind of a sub-rule to make it mandatory or imperative for them to pay. That's all. And we'll request the government, and you see all the parties, across the parties, I think every time whenever I have contacted any party or any ministry, government, they have been extremely sympathetic with the cause, and they have respect for the Indian artists, and they would like to, they have often gone out of the way to help us. So I have no such problem. All we have to do now is to go again and tell them that this is what is wrong. I mean, you have made a fantastic law, but it is not working on the ground, and please see to it that it is compliant. नहीं, अब वो तो देखिए बनते वक्त थोड़ी मालूम होता है कि ये शोले हो जाएंगी या ये दीवार हो जाएंगी, वो तो उसके बाद होती हैं। और कोई बात नहीं, ताजमहल तो इनसे भी ज़्यादा पुराना है, अजंता इनसे भी ज़्यादा पुराना है, मैं लोग याद करते हैं। कुछ अच्छे काम होते हैं जो रह जाते हैं पब्लिक मेमोरी में। एंड द फिल्म यू आर टॉकिंग अबाउट है somehow, why I don't know. If I knew it, I would have done it again and again. कि वो इंडियन साइकी में चले गए हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन जो कॉमन लैंग्वेज है उसका हिस्सा हो गए। एक पिक्चर जो 50 बरस पहले बनी थी, आज तक वो स्टैंड अप कॉमेडी में उसके डायलॉग यूज़ होते हैं, दूसरी फिल्मों में उसके रेफरेंस होते हैं, लैंग्वेज इवन इन पॉलिटिकल स्पीचेस वो यूज़ किया जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो how and why it has happened, I mean, what is charisma? There is no definition of charisma. It happens and then you try to reason it out, find some rationale or logic in it, but I think it is beyond it. I remember Orson Welles, the famous actor, director, producer, had said once that I don't think you should be rude to people, but they should know that you can be. So it's very surprising and refreshing to see that. हाँ, बोलते हैं दोस्त भी कह रहे जाने दीजिए, आपको क्या है, आप यू आर अबव ऑल दीज थिंग। ऑफ कोर्स फॉरगिव मी फॉर माय मॉडेस्टी, मैं ज़्यादातर तो अब भी फील करता हूँ इनसे, लेकिन कभी कभी यू हैव टू कम डाउन एंड टेल देम दैट नो, यू कांट टेक दिस लिबर्टी, एंड इफ यू विल, आई विल पे यू बैक इन द सेम कॉइन्स।